Hello everyone and welcome to Defense Shows. I KIRAN. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms, and after that a sentence formation. It is useful for all defense examination and competitive examinations. So here we go. The first word is ambiguity. See, ambiguity is a noun which means inexactness, right? Which means inexactness. Here the thing is not exact what you have seen before. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी बोलते हैं. ऑलराइट, एम्बिग्यूटी को और क्या बोल सकते हैं? एम्बीवैलेंस. सी, एम्बीवैलेंस मतलब होता है that you don't know that it is directly positive or negative, right? It contain both positive and negative component. Ambivalence मतलब होता है it contain both positive and means the person don't know that it is right or wrong. It is between right and wrong, right? It contain both positive and negative component is known as ambivalence. All right, so synonyms are equivocation and obscurity, right? तो इक्विवोकेशन मतलब होता है टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ वन वर्ड. टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ वन वर्ड. Two different meaning of one word is known as equivocation. All right, so next synonym of ambiguity is obscurity. See, obscurity मतलब होता है the state of being unknown, right? It means the state of being unknown. Being unknown is known as obscurity. Now let's see the antonyms. These are unambiguous and transparency. Transparency here means कि कोई चीज़ क्या है? एग्जैक्ट है. क्या है? एग्जैक्ट है इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. ये क्या है? ऑपोजिट है एम्बिग्विटी का. एंड अनएम्बिग्युअस मतलब क्या था? इट मीन्स समथिंग इज स्पेसिफिक. एम्बिग्युअस मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक, राइट? सो अनएम्बिग्युअसनेस मतलब क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक. All right, so let's see the example. We can detect no ambiguity in this section of the act. Means we cannot detect not any ambivalence in this section of the act. All right, next word is bar. Bar is a verb, right, which means prohibit. किसी चीज़ को मना कर देना. Prohibit जो बोलते हैं ना, मीन्स वहाँ वो चीज़ें अलाउड नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं. सो सिनोनिम्स आर डेबर एंड प्रीक्लूड. सी, डेबर मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना. डेबर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ एक्सक्लूड करना. राइट, एक्सक्लूड करना इज नोन एज डेबर. एंड प्रीक्लूड मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग. कोई चीज़ होने से पहले ही रोक देना, कोई किसी चीज़ को इम्पॉसिबल बना देना इज नोन एज प्रिक्लूड. ऑलराइट, सो ऑपोजिट वुड बी एडमिट करना. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. सी इज बेयर्ड. सी इज बैरिड फ्रॉम लीविंग द कंट्री. द बार का बैरिड हो गया, राइट? सो प्रोहिबिटेड. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सिलरेटेशन. देखो, एक्सिलरेशन इज अ नाउन विच मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी होना. ठीक है, बहुत ज़्यादा जील में इंसान होना इज नोन एज एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन, राइट? एक्सिलरेशन मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट में है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरेशन बोलते हैं. सो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएंगे? यूफोरिक बोलते हैं ना, एग्जैक्ट दुनिया में ना रह के बहुत एलिएटेड फॉर्म में रहना, बहुत खुशी फॉर्म में रहना, उसे हम क्या बोलते हैं? यूफोरिक बोलते हैं. और एक्सिलरेशन सेम है. एक्सिलरेशन का मीनिंग एंड इलेशन, ये क्या है ना? डिग्री ऑफ एक्साइटमेंट है. ऑलराइट, सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिजेक्शन. कोई एक्साइटमेंट नहीं है, डिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. They felt the exhilaration of victory. Means they felt the excitement of the victory. Now let's see next वर्ड. इट इज़ ग्रिगेरियस. जहाँ भी ये ग्रिगेरियस वर्ड आता है ना, वो एक एडजेक्टिव है विच मीन्स द पर्सन इज सोशिएबल. मीन्स ही कैन मिंगल विद अदर पीपल इज नोन एज ग्रिगेरियस. एंड ग्रिगेरियस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं. ग्रिगेरियस मीन्स फॉन्ड ऑफ कंपनी, राइट? फॉन्ड ऑफ कंपनी is known as gregarious. So similar words are
social and companionable, right? Social means the person is very friendly and social to other one, and companionable means friendly. It means friendly. All right. So opposite would be unsociable. The person is not social, he is or she is introvert, is known as unsociable. All right. So now let's see the example. He was a popular and gregarious man. He was popular and, it is not gregarious, it is gregarious man, means sociable person. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीम. इंट्रीम ना कुछ छोटे टाइम के लिए, कुछ बोलते हैं ना इंट्रीम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, एक एडजेक्टिव है विच मीन्स दैट इज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. इट इज़ नॉट फुल पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज interim, right. It is an adjective which also means provisional. देखो बोलते हैं ना provisional certificate, तो provisional क्या है, एक existing है, present में जो चीज़ exist करती है but not for the future, right, is known as provisional. ठीक है. arrange or existing for a present possibility and there is possibility that it will change in future is known as provisional. alright. so इसके opposite क्या हो जाएगा, permanent, which is not temporary, which is permanent, is the opposite to the interim. So similar word to the interims are temporary and pro-term. Pro-term means for the time being, कुछ समय के लिए, for the time being, alright, is known as pro-term. Now let's see the example. An interim arrangement was made means a provisional arrangement was made. It is not permanent. all right. Next word is sweeping. See, sweeping मतलब होता है wide and range और effect. कोई चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं, एंड स्वीपिंग बोलते हैं. स्वीपिंग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव विच मीन्स एक्सटेंसिव. देखो जहाँ भी एक्सटेंड वर्ड आ जाता है ना, उसका मतलब ही क्या होता है, कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया. ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव बोलते हैं. सिमिलर वर्ड्स आर वाइड रेंजिंग, बहुत ज़्यादा रेंज लेना, एंड ग्लोबल. ग्लोबल वी ऑल अंडरस्टैंड, मतलब पूरा वर्ल्ड को कवर कर रहा है, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल बोलते हैं. ऑलराइट. सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा उसका, नैरो, थोड़ा छोटा. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. We can't recommend any sweeping alteration, right. We cannot recommend any sweeping, any extensive alteration. Next word is prudence. देखो prudence जहाँ भी आता है ना, उसका मतलब कोई चीज़ क्या है, समझदारी की हो रही है, वाइस हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, prudence बोलते हैं, बुद्धिमानी. ऑलराइट. तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, wisdom. Synonyms are judgment and sagacity. देखो judgment here means that you know what is right and wrong. ठीक है, तो we can judge. alright. so sagacity here means a wise person who can judge the situation is known as sagacity, right. Opposite would be fully. Fully here means foolish. ठीक है, lack of good sense and foolishness is known as fully. alright. now let's see the example. We need to exercise prudence in such important matter. next word is shrug. Shrug क्या है, यहाँ एक verb है which means disregard, that you don't agree upon the things what other has said, right, is known as shrug. Shrug means it is a gesture, right, of being indifferent about something, that you don't agree, you show some gesture that okay, I don't agree, like this. okay. Similar words are dismiss, किसी को चीज़ को dismiss कर देना, disregard करना, agree नहीं करना, take no notice of, कुछ उस बारे में बात नहीं करना, right, that you don't agree, you don't take any step further. Opposite would be heed. Heed मतलब pay attention to. okay, you are paying your full attention to something is known as heed. now let's see the example. The managing director shrugged off the criticism. shrugged off मतलब क्या है, disregard. alright. next word is measure. measure मतलब होता है बहुत थोड़े समय के लिए, right, means scanty and sparse. scanty means small and insufficient. and इनसफिशेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, एबेंडेंट, राइट. एबेंडेंट मतलब होता है एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. हिज पेरेंट्स वर पुअर एंड ही रिसीव्ड अ मेगर एजुकेशन, मीन्स ही अटेंड अ लेस एजुकेशन. ठीक है. एंड स्कैंटी एजुकेशन इन अ शॉर्ट सप्लाई. स्पार्स मतलब क्या है, शॉर्ट सप्लाई. ठीक है, शॉर्ट सप्लाई, कम सप्लाई होना. alright. next and last word is
रिवेटेड इज एन वर्ब विच मीन्स फैसिनेट. रिवेटेड मतलब समझते हैं होल्ड फास्ट सो एज टू मेक इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट. ठीक है, किसी चीज़ के मोहित हो जाना, राइट. दैट यू आर फैसिनेट अबाउट समथिंग इज नोन एज रिवेटेड. सिनोनिम्स आर इनग्रोस एंड ग्रिप. ठीक है, दैट यू आर इंटरेस्टेड इसका सिनोनिम हो जाएगा. एंड ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दैट यू डोंट इंटरेस्टेड बाय दैट समथिंग इज नोन एज द opposite of reverted and boring, right. That you are not inclined over that thing, you can see. Now let's see the example. He was riveted by the newsreel shown on television, means he was interested by the newsreel which is shown on the television. So here we have completed the 10 new words of today. I hope you like this session. If you like this session, don't forget to like it, share and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.